જૂનાગઢમાં મુસ્લિમોના પવિત્ર તહેવાર રમઝાન ઈદની ઉજવણી ધામધૂમથી કરવામાં આવી હતી। ત્યારે શહેરની અલગ અલગ મસ્જિદ ખાતે મોટી સંખ્યામાં મુસ્લિમ બિરાદરોએ ઈદની નમાઝ અદા કરી હતી। આજે દેશમાં ઈદ ઉલ ફિત્રની ઠેર ઠેર નમાઝ અદા કરવામાં આવી હતી। જુમા મસ્જિદના ખતીબે ઇમામ અલી મોહમ્મદ રહેમાનીએ જણાવ્યું હતું કે દેશમાં ભાઈચારો રહે અને કોમી એકતા સાથે તમામ તહેવારો ઉજવાય તેવી દુઆ કરવામાં આવી છે। બંદોબસ્તમાં રહેલા પોલીસ જવાનોનો પણ આભાર વ્યક્ત કરી જિલ્લા પોલીસ વડા હર્ષદ મહેતા સહિતના અધિકારીઓનું ખતીબે ઇમામ દ્વારા અભિવાદન કર્યું હતું। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह। आज रमज़ान शरीफ के इख्तिताम पर अल्लाह पाक ने जो हमें ईद सईद का मौका अता फरमाया। हमने ईदगाह मस्जिद पर आकर 2 रकात नमाज अदा की है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू की बारगाह में दुआ की है कि अल्लाह पाक हमारे घरों में, हमारे माशरे में, हमारे गाँव में, हमारे सूबे में, बल्कि हमारे मुल्क में और पूरी दुनिया में अमन व अमान और सलामती और मोहब्बत अता फ़रमाए। अल्लाह पाक हमारे माशरे से जातिवाद, कौमवाद सबको दूर फरमाए और हर कौम को हमारे साथ और हमें हर कौम के साथ मिलनसारी के साथ अपने त्यौहार मनाने और मिलनसारी के साथ रहने की अल्लाह हमें तौफीक अता फ़रमाए। मैं तमाम लोगों का, तमाम अहले ईमान का और सिक्योरिटी पुलिस वगैरह अफसरान का सबका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ और रब्बे करीम तबारक व ताला हमारी इस मोहब्बतों को कायम और दायम रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।